Assalamu alaikum dear students. This is part 2 of model paper number 4 for the post of lecturer education. PPSC, FPSC, KPSC और SPSC में जो टेस्ट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 जो है वो आप जाके देख सकते हैं लर्न सोशियोलॉजी एकेडमी पे. So let's start from question number 51. And which of the following components of attitude represents a person's opinion, knowledge and information? Cognitive component. And the worth of a student or person attached to a particular object or phenomena is valuing. And which is the smallest psychological factor of students' classification in the school? And that is age. That is age here. Of course, जो आपके बच्चे होते हैं 3 years के 3 to 6 years के, तो वो लाइक मोंटेसरी सेशन में होते हैं. प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप वो पढ़ते हैं. फिर इसी तरह से एज के अकॉर्डिंग वो अगले लेवल पे जाते रहते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ एंड विच इंक्लूड्स द complete school environment involving all the courses, activities, reading and associations furnished to the people in the school curriculum. And syllabus is a list of topics of a subject that is prepared for all of these: public examination, fulfillment of natural objectives and natural education program. Let's move to the question number 56, and that is, in students classification the term lockstep is a problem which made administrator very difficult to meet the needs of students. And which book is the Bible of curriculum development? Basic principles of curriculum and instructions. The total time is allocated for teaching and learning process. Allocated time. Ballpoint 1938 is presented by Laszlo Biro, under which report Director of Public Instructions DPIs in provinces were appointed. Wood's Dispatch 1854. This question is from द कलेक्शन जो मेरे पास मौजूद है, और मैं जनरल नॉलेज की 5000 MCQs की सीरीज़ की फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. डू फॉलो दैट ऑल्सो. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. दिस style uses maximum teacher talk time and gives little room for students' participation, formal authority, and the teacher acts as a guide to assist the student in applying the knowledge into a similar situation. Democrator. The teacher believes that students learn best through activities. Facilitator. And the teacher develops creativity, research skill and sense of responsibility in students. Delegator. The teacher invites the learner to share case. Collaborator. Which technique of research entirely eliminates the bias factor in the experiment?
randomization, and teacher places firm limits and control on the students. Authoritarian, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है. And teacher places firm limits and control on the students, but at the same time encourages independence. Authoritative, the school is characterized by a lack of environment. The environment is not disciplinary. There are few demands on students and there is a lot of freedom. Permissive. Let's move to the next one. And the style presents an environment where no demands on students of any sort. Indulgent, and in this technique teachers will demand students attention before you begin and wait until everyone has settled down. Focusing, and teacher tells the students clearly what they are going to do in that period. Direct instructions, and teacher moves around the room while the students are working, is called monetization. And MC Daniel says values are caught, not taught, and this notion represents the modeling. कि आप जो एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ सीखते हैं वो आप पढ़ा के या बुक्स के थ्रू, रट्टे के थ्रू वो आप चीज़ें नहीं सिखा सकते. जो चीज़ें आप मॉडलिंग मीन्स कि आप प्रेजेंट करें सामने और बच्चे उनको देख के कॉपी करें, और वो जो उनकी शख्सियत का हिस्सा बनेंगी चीज़ें वो लाइफ टाइम उनके साथ चलती हैं. अगर आप उनको थेरीज पढ़ाते रहें, बुक्स में पढ़ाते रहें, तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती. इट कैन बी facial expression, body language and signals. Non-verbal, domain of educational objectives that encompasses knowledge and intellectual development is called cognitive domain, and which method of teaching relies on students' self-directed learning. Montessori, and which scales measures the extent of individuals' agreement and disagreements with each item, which determines their attitude and perceptions. Likert scale, and here is number 79. Fountain pen 1884 was patented by, and the number of reserved seats for women in the National Assembly is 60. And if 4x plus 13 is equal to 7 minus 2x, what is the value of x minus 1? इसको आप सॉल्व करके ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है कि विदाउट प्रैक्टिस आप उसको नहीं कर सकते, रट्टा नहीं उसका लगा सकते. So let's move to the next one. Number 93, and the number of reserved seats for women in the National Assembly is 60. We have done this. And a boy saves RS 4.56 the first month, RS 3.82 second month, and RS 5.06 in third month. How much did he save altogether? 13.44 is its answer. And
The highest number of hadiths were narrated by हज़रत अबू हुरैरा। और हज़रत अबू हुरैरा के बारे में आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि उन्होंने बिल्लियाँ पाली हुई थी, बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ। उनको उस चीज़ का शौक़ था और उनके इसी शौक़ की वजह से उनको हुरैरा का जो है वो दिया गया टाइटल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हमदर्द अखबार किसने जारी किया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। और ये शेर किसका है? मोमिन का, कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और मंदरज झैल में से खिताब कौन सा है? कायदे आज़म। जदीद गज़ल का इमाम किस शायर को कहा जाता है? हज़रत मोहानी को कहा जाता है। और टेल मी इन द कमेंट्स आपको मज़ीद किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर लाइक नहीं तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद नहीं आई वीडियो, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मैं इससे बेहतर काम करूं। और वीडियो को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नॉलेज जो है उसे हमें स्प्रेड करना चाहिए। मतलब एक कुर्सी में अगर आप बंद कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको शेयर करना चाहिए अपना नॉलेज दूसरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।